recording the session now. I think you can see the legend. Recording started. To everybody to be aware, this session is now being recorded. Okay, let's go for it. As I said, we will talk about clouds formation and the weather associated with it, with different types of clouds. So they are classified, as far as clouds are concerned, they are classified according to height above sea level and the appearance. Both are instrumental in classifying the clouds, which is height above sea level and its appearance. Now, when we talk of appearance, we are looking at the appearance, texture, something from the ground, from the sea level. Obviously, if you have a cloud appearance which you are going to judge from height, it is going to be different. But when we say classification of the cloud, it is according to the height above sea level and the appearance of the cloud from the sea level. So there are various types of clouds, but as I said, broad classification includes high level clouds, mid level clouds, and low clouds. Then when we say by appearance or texture, then zero. This is signifying the type of cloud which has curl of hair. High cloud. It is a high cloud. Cirrostratus, cirronimbus, like this. Then alto is mid-level cloud. Strato is low-level cloud. Nimbo is signifying rain and precipitation. Cumulo is certifying or signifying heap of cloud. Before we go further, can somebody confirm that you can see the shared screen? Yes, sir. Yes, sir. We can see. Shared screen. Yes, sir. Okay, very good, very good. Thank you. So when we say high level clouds, what do we mean? We mean clouds which occur above 20,000 feet and they're given a prefix. The prefix is zero. Charlie, India, Romeo, Romeo, Oscar, zero. Clouds of these kind are primarily composed of ice crystals because of the height above which they are forming, because cold tropospheric temperature will give rise to freezing of the rain droplets or the clouds which are formed by water vapor. They can freeze, and therefore primarily these clouds are consisting of ice crystals, and they often appear thin clouds, and white, of course. It may have a different appearance by color if this cloud is forming somewhere near sunset, and then it can, the color of the cloud could be different because of the low sun angle. So main type of high clouds: cirrus, cirrostratus, cirrocumulus. As we can see, it is prefixed by the word cirrus or cirro. So the main type of high clouds will be cirrus, cirrostratus, and cirrocumulus. They are wispy, feathery, and composed of ice crystals because of the high altitude where they are forming, which is a cold troposphere temperature, can give rise to freezing of the ice crystals. Freezing of the water vapor, giving rise to ice crystals. Now this actually, as far as the weather is concerned, this is the first sign of an approaching warm front. This is the first sign that there is a warm front approaching. So this is cirrus, the high level cloud. But when we talk of actually the warm front actually approaching, that is a sign. But when it actually approaches or hits the place, then these cirrus clouds tend to thicken into cirrostratus. From cirrus, it becomes cirrostratus if the warm front is actually there now. Actually physically present, the warm front, then they turn into what is called cirrostratus. सर फ्रंट का मतलब क्या होता है? Sorry?
किसका मतलब? फ्रंट फ्रंट फ्रंट? No, front we will do front. It is a different topic altogether. Actually, since you have asked a simple definition, it is a point, it is a topic we are going to take up. But front is described as a boundary between two different air masses. You see, सर कैसी शेप होती है उसकी? front will take the shape of the atmosphere. Front is a boundary between two different air masses. You have a warm front, which means, again we go to the definition, it means a warm front is described as a front the passing of which leaves the atmospheric temperature higher than before. That is called a warm front. Simple definition. But actually the front is the boundary between two different air masses. So we are going to do that. We are going to talk about it. I don't want to diversify into that now because that will break our flow for the clouds part. सर ये हाई लेवल क्लाउड्स के नाम कैसे पड़े, जैसे साइरस, साइरो स्टेटस, साइरो क्यूमुलस, मतलब ऑन विच बेसिस साइरो आगे लगाया है? बेसिस तो यही है कि it was decided like this, they are named like this, nothing scientific about it, nothing scientific about it. नहीं सर, जैसे लिखा है ना, जैसे ये ऊपर थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए सर, जैसे साइरो मतलब कलर ऑफ एयर हाई ऑल टू मिड, तो ये किसी बेसिस पे ही तो बनाया है। जैसे निम्बो मतलब रेन, मतलब हाई लेवल क्लाउड्स रेन नहीं करते, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है. निम्बो इज सिग्निफाइंग रेन. तो मतलब ये जो नीचे वाले हाई लेवल क्लाउड्स है, इनसे रेन नहीं होगी, दैट मींस सिंपल लाइक दैट. कौन से नीचे वाले? मैंने तो नहीं पढ़े. कौन से नीचे वाले? सर जहां आपने ये मार्कर घुमा रखा है, इसके नीचे साइरस, साइलो स्टेटस, साइरो क्यूमुलस, ये 3 क्लाउड्स लिखे हुए हैं. ये हाई लेवल क्लाउड्स हो गए. हाँ हाँ. और निम्बो मतलब रेन पार्टिसिपेंट रेन हो गया. बेयरिंग. निम्बो का मतलब है रेन बेयरिंग. दे आर सपोज टू बी रेन बेयरिंग क्लाउड्स. निम्बो स्टेटस. शिवांग, साइरो का मतलब होता है कर्ल ऑफ हेयर. या सो बालों, वो लैटिन वर्ड है एक्चुअली. बाल होते ये ना, देखो ना, अगर ऐसा क्लाउड दिख रहा है इसलिए उसका like a नाम curl है, of ये hair, सारे then क्लाउड it इसी has been टाइप के named होते as हैं, तो Sairo. इसका नाम डाला हुआ है साइरो. अरे नाम चेतन, नाम मैं समझ रहा हूँ, मेरा पूछने का मतलब सर से था पहले तो ये, और दूसरा ये कि जो हाई लेवल क्लाउड्स है वो रेन नहीं करेंगे क्या? बात सिंपल सी है. ये आपने कहाँ पढ़ा? मैं समझ नहीं रहा हूँ कि हाई लेवल क्लाउड्स रेन नहीं करेंगे. ये कहाँ लिखा है? वो ही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, मेरे को पता होता तो मैं पूछता ही क्यों. नहीं, ऐसा कहीं ये डिस्क्राइब नहीं है कि हाई लेवल क्लाउड्स रेन ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन जहाँ तक उसका नाम की बात है, अगर वो ऐसा दिख रहा है, अगर वो दिख रहा है लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर, हवा बाल की तरह दिख रहा है, देन इट हैज बीन नेम्ड साइरस. दैट इज द न्यूमरोलॉजी और nomenclature. But it does not mean it is not going to rain. Agar suppose nimbo stratus by any chance is forming high level, like in tropical revolving storm TRS, then it is going to rain. सर टीआरएस में ये वाले क्लाउड्स फॉर्म ही नहीं होते. अच्छा, हाँ, लो बेस क्लाउड्स होते हैं टीआरएस में सारे. what about the outer fringes? Outer fringes? वहाँ भी लो बेस क्लाउड ही होते हैं आउट ऑफ. जहाँ रेन हो रही है वहाँ तो लो बेस ही हो. इसलिए तो मैंने पूछा सर, क्योंकि मैंने हाई बेस क्लाउड में कभी रेन देखी नहीं इन प्रैक्टिकल, इसलिए मैंने कहा मैं आपने देखा हो तो मैं आपसे पूछ लूँ. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. बट जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं हो सकती है. Okay, anyway, we will keep on talking about it, no problem. Then mid-level clouds are prefixed by the name alto, jag. Low clouds, high-level clouds have been prefixed by Syro. Low-level clouds are prefixed by mid-level clouds are prefixed by alto. So mid-level clouds mainly two: alto stratus and alto cumulus. Appearance like this. Now
they do have a vertical extent. They rise. Alto stratus, alto cumulus, alto वाले जो हैं mid-level clouds, they do have a vertical extent. They may rise vertically. Now, what is happening here is that let us look at some photographs also for a clear understanding. तो हो गया क्लासिफिकेशन, हाई लेवल, मिड लेवल, लो लेवल. सर ऊपर करना है एक बार स्लाइड को, वो दिखा रहा है ऊपर करो ऊपर. हाँ अब ये और ऊपर करो सर थोड़ा सा. अब इसमें देखो सर, जो सायरो वाले हैं वो नॉर्मली रेन नहीं दिखा रहे, ये नीचे वाले दिखा रहे हैं. ओके, इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे सर, ये चीज मैंने कभी देखी नहीं इसलिए. ठीक है, ठीक है, पॉइंट टेकन. नाउ ये आप इसको किस कैटेगरी में रखोगे, इस क्लाउड को? हाई लेवल. हाई लेवल, बट दिस इज रेन बेयरिंग. Cumulonimbus, this is rain bearing definitely. सर कैसे पता चला आपको ये नीचे तक आ रहा है? इसलिए यहाँ तो क्यूमुलस है इसलिए. ये जो है रेन बेयरिंग क्लाउड है cumulonimbus. This forms in TRS also, cumulonimbus. It is rain bearing cloud. So this is why I'm saying you might have observed this. Maybe you're right. I'm not debating on that. Maybe you got a point कि साहब तुमने देखा ही नहीं कि सारे clouds rain bearing होते हैं. लेकिन it will depend on the type of cloud. Like cumulonimbus is rain bearing, and this you can see as we are going through the slide. It is a high level cloud. Okay. Now, what is cloud actually? Very simply, accumulation of minute droplets of water, or it could be accumulation of minute drop of water, ice crystal, or maybe both, suspended in air. So that is a cloud. Simple accumulation of minute droplets of water, ice crystal, or maybe both. They will vary in shape and size, obviously, depending on where they are formed, and of course as we said, they will be classified according to the height above sea level and their texture or appearance above sea level. If this cloud is forming at the ground surface or sea level, then it is called fog, ice fog, or mist. If it is forming right at the sea level, then it is cloud only. It will be called, but it will be called or referred to as fog, ice fog, or maybe mist. Although it is a type of cloud, but it is right at the sea level, so it is termed as fog, ice fog, or mist. सर हाँ बोलिए. सर मैंने जस्ट एक बार ऐसे सुब्रा की खोल ली थी मैथ की किताब. इसमें ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म में जो आप कह रहे थे फ्रिज के पास, उसमें वहां पे सिर्फ निम्बो स्टेटस, ऑल्टो स्टेटस और साइरस दे रखा है. और ये तीनों में से जो हाई बेस क्लाउड है वो साइरस है, वो भी आउटर लिमिट पे दे रखा है. बाकी सारे लो बेस दे रखे हैं. इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बारिश होती है या नहीं होती. स्क्रीन शेयर करूं सर ये इसकी फोटो की, अगर आपको हो तो मैं फोटो भेजूं. तो मेरे पास है किताब. आई विल कम बैक टू दैट किताब एंड द टॉपिक व्हेन वी डू टीआरएस. राइट नाउ आई डोंट वांट टू गो टू इट. Sir, what I am asking is not about that topic. I am only asking कि high level clouds can rain or not. If they are cooled and they give out water vapor, it will rain. How will it rain actually? For any cloud, how will it rain? How it rain मतलब वो तो सिंपल सा है, प्रेसिपिटेशन होगा क्लाउड्स का, उसके बाद रेन हो जाएगी. बट दैट लो बेस में तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है. Okay. पर ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा, दैट आई एम आस्किंग. वो बारिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते.
जनरलाइज तो आई डोंट थिंक यू कैन जनरलाइज इट कि हाई लेवल क्लाउड है तो बारिश होगी नहीं, ऐसा नहीं है. फिर ठीक है सर. ओके सर. So we go one by one. High level clouds. ये example है. Cirrus. This is a high level cloud just by appearance. Purposely I'm sharing a photograph so that you can see the appearance also. It is important also to recognize it. Although really speaking, the issue will arise when it is raining because that is going to create concern as navigator. So this is cirrus type of cloud, and as you can see, filament and wispy appearance. And it will have a silky sheen appearance also. From the photograph you can see. Right, then going further, this is cirrocumulus. Cirrocumulus. Description: this forms about 5 kilometers above the surface. Small white fluffy pattern. Small white fluffy pattern. Cirrocumulus. Remember, we are talking about high clouds. Now, they do look like, if you see, they are also referred to something like appearing like fish scales, the scales on the body of the fish. So it is also referred to grayish color, look like fish scales. This is cirrocumulus. Now, weather associated to remember is that these clouds come after cirrus clouds. First the cirrus clouds form, then there is a passage of warm front, then these clouds come. Cirrocumulus clouds are formed after a passage of warm front. This is a structure of cirrostratus. This has appearance like a blanket. This one, cirrostratus. And this is a high cloud. We have agreed we are talking about high clouds, right? Have a look at this. The sight of them usually means rainfall is imminent in next 24 hours because they're going to move in a westerly direction and they're going to descend. Once they descend, they will turn into altostratus clouds. सर हाँ जी बोलिए. सर ये साइरोस्ट्रेटस में हेलोज वगैरह क्रिएट होते हैं क्या? हेलोज क्रिएट होते हैं? हेलोज. यस सर. हेलोज तो ये जरूरी क्यों होंगे साइरोस्ट्रेटस में ही होंगे? नहीं सर, कहीं पढ़ा था कि हेलोज क्रिएट होते हैं. सर हेलोज वैसे जैसे मिड लेवल क्लाउड्स में ऑल्टोस्ट्रेटस में होते हैं ना, तो ये है मिड लेवल क्लाउड. नहीं, ऑल्टोस्ट्रेटस सर इसमें होते हैं ना, ऑल्टोस्ट्रेटस मिड लेवल्स में होते हैं. Alto तो is ये the मतलब prefix. दोनों. Alto is the prefix used for हाँ mid जी level. सर. नहीं सर, ऑल्टोस्ट्रेटस और ये क्या सीरोस्ट्रेटस मोस्टली दिखने में थोड़ा बहुत सेम ही होते हैं ना, तो हेलोज इन दोनों में से किसी एक में क्रिएट होते हैं हेलोज. पर वो जो सन के आसपास जैसे वो लाइट हो जाती है ना, वो वाला, हाँ. वो इसमें होते हैं कैसे सीरोस्ट्रेटस में? सीरोस्ट्रेटस में. यस सर. सीरोस्ट्रेटस तो हम छोड़ा है ऊपर. I mean that is a high level cloud. ठीक है. Let me see. You have asked a question. Ready-made answer नहीं है मेरे पास. ठीक है सर. Right.
That is alto of mid-level, like this one. This is something different. This is altostratus. Rainy day. It simply says rainy day, which we will agree. This clearly indicates a rainy day. Altostratus. Now, what is happening is this altostratus can then morph or graduate into what is called nimbostratus. Nimbostratus is definitely rain bearing. When we say weather associated, we need to clearly understand that altostratus may not bring rain, but altostratus can gradually grow into nimbostratus, which is rain bearing. As it is, the name nimbostratus is from nimbus, rain. Nimbus, Latin word nimbus, which means rain. And stratus means spread out. So these are heavy rain clouds. So much so they can clearly obscure the sun itself. Now they can descend lower down. Although they are mid-level clouds, they can descend lower down, and then they can, condensate or give out rain. Then low level. Low level is prefixed by stratus. Low level prefixed by stratus. सर ये माइक ऑन है किसी का? Sorry, I didn't understand. Please go ahead. माइक खुला हुआ है किसी का? That's what you're saying? हाँ सर बंद हो गया. बंद हो गया, ठीक है. एक्चुअली रिक्वेस्ट तो यही है कि म्यूट कर लो अपने आप को. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द बटन. आई कैन नॉट लोकेट इट. बिकॉज यूजुअली यू हैव एन ऑप्शन म्यूट ऑल. वो आज नहीं दिख रहा है यहाँ. वो पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके शायद आता है सर. पार्टिसिपेंट्स पे जो ये किया हुआ मैंने किया हुआ है. ये क्रॉस वाले के पास में सर, ऊपर इन द राइट कॉर्नर सर, जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे शायद म्यूट ऑल. ओके. वो अटेंडेंस के साथ. अच्छा खासा चेतन शर्मा बोल रहा है, उसको चुप करा दिया तुमने. सर अटेंडी के बगल में भी लिखा हुआ है. अरे अब आया भाई, नहीं था वो, देख रहा था मैं, पहले नहीं दिख रहा था. अब चलो, अब हो गया, म्यूट ऑल हो गया. बट अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, अगर आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो and you unmute and talk. If you want to raise a query, question or interaction, you unmute and talk, because otherwise of course there is a lot of background disturbance which can lead to disturbance for everyone else. So चलो, anyway अब मेरे ख्याल से अब म्यूट है. We can continue. म्यूट तो हो गया है. So what is happening here is that when it comes to forecasting, clouds do play a part forecasting, weather forecasting. And why it is so is because clouds will play a part in radiation hazard, means blocking radiation from sun and then also blocking radiation from earth back into space. So that is going to influence the weather, because if radiation is blocked by the clouds to go back into the space from where it is coming is the sun. So if it is blocked, the temperature of the sea will rise, or the space above the sea will rise, because if it is obscured, if it has a cloud cover, then radiation cannot go back into the space. Therefore, it will be blocked, and this is going to inhibit radiation from the surface, which means that imbalance is created as far as energy conservation is concerned. Precipitation from clouds is producing water vapor, and that has got, what you will understand and you will agree and you will keep remembering it,
always that when precipitation takes place, which is the cooling, it will release latent heat, hidden heat in the atmosphere, which is a process of evaporation. So when latent heat is released during precipitation, it is going to give rise to the surface temperature, air temperature. Latent heat means hidden heat. As the water vapor is condensing, it gives out latent heat that will give rise to the temperature. So that will influence the weather also. So balance has to be achieved, but if clouds are present, they will modify the relative energy balance, which means exchange of the heat from, we will talk of sea surface to atmosphere, and because cloud cover is there, the radiation from the atmosphere into sea surface is going to be imbalanced, which is going to produce a weather change. So this will influence weather. Let us put it this way. Instead of saying that it will determine the weather, a better word will be it will influence the weather. If cloud is present, it is going to cause imbalance of the transfer of energy to and from sea surface. Then there will be some imbalance created. Obviously, what I'm trying to say is that there should be a balance between absorbed solar radiation and emitted heat radiation, which sets the temperature. सर इसका मतलब क्या है ये तो समझाओ. ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन और इमिटेड हीट रेडिएशन सेट द टेम्परेचर का मेरे समझ नहीं आया. ओके, सोलर रेडिएशन अर्थ सी सरफेस पे पहुंच रही है, दैट इज ओके. नहीं सर नहीं है. ओके बताओ. जब सन अपना हीट ट्रांसमिट कर रहा है, हाउ डज इट रीच द सी सरफेस और द अर्थ सरफेस? हाउ डज इट रीच? It is called radiation from the sun. Okay. So that is solar radiation because we are talking of sun radiation. Now, this is one category. Okay, solar radiation is being transmitted and is being reached at the earth or sea surface. That is solar radiation. But it is also a fact that this heat radiation is also going to be transmitted back into the surface, into the atmosphere, which is the emitted heat radiation. It is not going to be absorbed completely. Some of it is going to be reflected back, radiated back into the space. The radiation received from the sun is going to be emitted back, reflected back by radiation only. And this is going to have a balance. It should have a balance. If it is not, because of cloud cover, this is going to cause what is called an imbalance, which will set the temperature of Earth. Means if the cloud cover is such, which is a very well known fact, even if you recall, if you have cloud cover at night, what do you feel? What do you have a effect if you have cloud cover at night? The minimum lower temperature is high because radiation from the earth cannot escape the atmosphere into atmosphere. Emitted the heat radiation from the earth fails to reach the atmosphere because it is trapped between the cloud cover and the surface. Then the temperature of that particular area will rise because now there is an imbalance. During daytime, when the sun was radiating heat energy to the surface, it was being absorbed. But it is supposed to re-radiate and emit it back. But if cloud cover is there, it will be trapped. If it is trapped, the temperature is going to not fall down. The temperature will stay as it is. That is going to cause an imbalance of the temperature. Aji, who was interacting? हाँ सर सब आ गया. Shivang Chaturvedi, you were saying something? Was this your question or something? मेरा ही था सर. आ गया समझ में. Okay. Just simply understand one thing, Shivang, that if cloud cover is there, heat energy absorbed by the earth or the sea is trapped because it cannot radiate it back into the atmosphere because of cloud cover.
When it cannot radiate it back into the cloud because of cloud cover, what will happen to the temperature of the atmosphere? Trapped energy है ना, it will make the temperature of the atmosphere rise. Maybe sea temperature नहीं, sea atmosphere temperature or earth atmosphere temperature. As I said, we will limit our discussion to sea. So sea के around the temperature it gets trapped because the radiation cannot go outward, so it is trapped. That trapped energy is going to make rise of the temperature surrounding. अगर क्लियर नाइट होगी शिवांग तो क्या होगा? इफ देयर इज नो क्लाउड कवर, क्लियर नाइट है, ड्यूरिंग डे टाइम एनर्जी फ्रॉम द सन हैज बीन अब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस, अब्सॉर्ब हो गई रेडिएशन. नाउ it is supposed to emit it back at night time, means reflected back by radiation only. But if it is a clear night, nothing is stopping it, it will go out. It is not getting trapped. Then what happens? The temperature are lowered. ऐसा नहीं गिर जाएंगे और freezing हो जाएंगे, but let us say we talk of the maximum temperature, minimum temperature. Minimum temperature is not hampered because radiation is not being affected. Re-radiation rather is not being affected. It can get carried away because there is nothing stopping it. Now remember, it is not only clouds which will affect the radiation trapped between the atmosphere and the sea surface, it is also going to be pollution. But I'm not talking of pollution because you see this is going to figure more at land, the pollution part. And this is the reason why you see that if very heavily polluted areas are there, like our capital city, then temperature differences are very little from maximum to minimum because heat radiation is trapped. This is okay. Cloud is formed when atmospheric water vapor is cooled and condenses on anything. Could be dust, sea salt. Sea salt is more appropriate for us. Suspended sea salt in the atmosphere. Dust, not really likely, but chalo, theek hai. All these are going to be nucleus over which the condensation of water vapor can take place, giving rise to clouds. Okay. Temperature gradients, variation from low to high altitude, low to high latitudes. These are called temperature variations. So gradients are formed. You are aware as you go higher up in altitude, temperature falls. But these are called variations and they are also classified as temperature gradients. Gradient means a slope. This is another thing which we going to talk about. It is contained in this discussion only, but separately. Greenhouse effect. Now this is a phenomena that wind generally moves moist air upwards and polewards. From tropicals, moist air moves upwards and polewards. This is a phenomenon. So this does cause what is called a temperature gradient or temperature variation. From the tropical surface, colder, drier air moves downwards and towards the equator from higher altitudes. Water is transported to higher latitudes at the upper levels, and this is going to cause what is called a temperature gradient. When water is transported towards the equator and narrowing it down means concentrating into narrow channel, there heavy rainfall occurs, which we are aware. This also has an influence on ocean currents, but that is another topic, separate topic.
Now ये एक चीज है which you will need to remember because this will keep on figuring. When water vapor condenses into a cloud and falls as rain, means condensation as rain, it releases what is called latent heat into the air. This makes the temperature of the atmosphere rise. This is why, if you will remember, when it is actually raining, you will see that the temperature is more. Although it is raining, because of the release of latent heat into the atmosphere, the temperature of the air rises. Atmospheric temperature rises because it is condensation releases latent heat, which is called hidden heat. But we know that heat cannot be created or destroyed. Conservation of heat. So how does it come in figure? How does it release heat? Where is it coming from? Where is it coming from? It cannot absorb heat. I mean, there's nothing to get it absorbed. Nothing. For conservation of heat or conservation of energy, this release of latent heat, how does it take place? Where is the heat coming from? For this, you will need to remember, as you also know, the whole thing is formed because of surface water evaporation. The heat required to change liquid into water vapor is absorbed from the surface, and this is carried along with the vapor into the air. When this water vapor condenses into a cloud, it falls as rain. Now, this latent heat, which was here, liquid to vapor, absorbed and preserved, this is released. This is why it is called latent heat, because actually you can't see it, but this is releasing. So conservation of heat is still there. When it was evaporating, it absorbed heat. When it was evaporating, surface water was evaporating, it absorbed heat that was preserved. And when it is starting to condense into cloud and rain, then it releases that heat. So some terms are used like cloud microphysical process, which means conversion of water vapor into cloud and precipitation. That is called cloud microphysical process. So what do you say, gentlemen? Please go ahead, candidates. Interaction is always welcome. सर टी टाइम टी टाइम क्या बोला यार? टी टाइम इधर लंच होगा। नहीं, हमें ये जरूरी नहीं है वैभव। अगर उसको चाय पीनी है तो उसको फोर्स थोड़ी करेगा कि लंच ही खाओ। जो भी है आप दे दो। अब मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों में से जो भी दे। अब रुक तो जा, दे देते हैं अभी। ऐसे मत कर। तेरा क्लास का टाइम है क्या शिवांग? ऐसे मत किया कर यार। क्या टाइमिंग है क्लास के? टाइम टेबल से देख ले। आई थिंक इट इज 13:45। देख ले, मे बी आई एम रॉन्ग। सर आप कैसे रॉन्ग हो सकते हो? नहीं आप तो कप्तान हो सर, कप्तान का भी वो गलत होते हैं क्या? बात देखो, जिस दिन आदमी को लगने लगा है कि वो सब कुछ जानता है, वही अंत है। रिमेंबर इट। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चलो तो एक्चुअली स्पीकिंग 13:45 है बाय टाइम टेबल, इजंट इट? तो 5 मिनट पहले तो समझ में आता है, क्योंकि बोसन होगा तो बोलेगा आदमी लोग को हाथ भी धोने का है। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ वर्क फ्रॉम होम है, कोई हाथ नहीं धोने, कुछ नहीं, सैनिटाइजर बगल में रखा है, मार लो, बस हो गया, यू आर रेडी फॉर लंच। सो जस्ट गिव मी 5 minutes, वी विल क्लोज इट डाउन, नो प्रॉब्लम। एज इट इज, शिवांग, डोंट गेट fed up because fortunately or unfortunately as things stand, I have another class with you, but this time on cargo hour 14:40 पे एक और क्लास है, ठीक है? सर अभी तो दूसरा वीक है, पूरा 3 महीने निकालने हैं अभी से, कहाँ से हम बोर होंगे आपसे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे शिवांग, एक बात है कि बोर होने की बात नहीं है। यू शुड लुक एट द ब्रॉडर परसेप्शन। तुमको, तुम्हारा शिवांग चतुर्वेदी, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है मुझे ये बताओ। फेवरेट कलर, रंग। सर 2 हफ्तों से तो ब्लू है,
बाकी पता नहीं। ब्लू है। चलो एनीवे मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, तुम्हारा फेवरेट कलर होना चाहिए ग्रीन। मालूम है क्यों? सर हॉरोस्कोप भी देखते हो क्या आप? अरे बात सुन, ग्रीन क्यों होना चाहिए सुन, क्योंकि डॉलर का कलर ग्रीन है। तुम्हारा फेवरेट प्रेसिडेंट होना चाहिए कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो डॉलर के ऊपर छपा है। तब इससे तुमको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई करने का। तो थोड़े दिनों बाद आप बोलोगे कि यूएस के सिटीजन भी होने चाहिए। नहीं, आई थिंक ही गॉट द हिंट। मोटिवेशन की बात हो रही है, टू मोटिवेट योरसेल्फ, तो सर ताकि आप इसको पढ़ते जाएं। सर सारे सब्जेक्ट मोटिवेशन आपने सिर्फ पास पैसे करने, से ही होता है क्या? सारे सब्जेक्ट आपने पास करने ही करने हैं, वेदर और नॉट यू सर लाइक इट। मोटिवेशन सिर्फ पैसे से ही होता है क्या? ऐसा है बॉस, मोस्टली पैसे से ही होता है। बाकी तो अगर जो तुम्हें डिनाई जितने करना पैसे, कर लो। सर जितने पैसे वाले हैं, वो ओशो, सदगुरु और यहाँ सब क्यों हैं? हाँ, वो नहीं है, मोटिवेटिंग फोर्स नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जितने पैसे वाले हैं जिनके पास कमी नहीं है, वो फिर ओशो और क्या बोलते हैं सदगुरु, इनके पास क्यों है? उन्हें किस बात का मोटिवेशन चाहिए? वो तो खुद ही पैसों से भरे हुए हैं। ये उनसे ही पूछो यार। सर मुझे बात मोटिवेशन चाहिए, सर मुझे बात मोटिवेशन। आपने चालू की तो मैंने आपसे पूछ मैंने तो लिया आपसे पैसे बात की। की थी कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आप तो पहुंच गए मैंने उसको पता नहीं कहाँ कहाँ। तो मैंने तो फेवरेट ब्लू कलर की बात की। मैंने तो फेवरेट ब्लू कलर फॉर ब्लू मोटिवेशन शुड बी ग्रीन, बिकॉज दैट इज द ग्रीन ऑफ द डॉलर। क्योंकि वही आपने आप कर कमाओगे, तो कमाने का जब मोटिवेशन होगा तो तुमको ये चीज बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम जानते हो कि एंड रिजल्ट ये है कि तुम एग्जाम पास करो एंड देन यू अर्न मनी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो मोटिवेटिंग फोर्स विल बी टू क्लियर द एग्जाम एंड अर्न मनी। तो सर ये बात सीधी लाइन में बोल देते हैं, अभी कलर पूछा फिर इतना घुमाया बिल्कुल जलेबी की तरह, फिर आप सर ये बात, वैसे बात सही कर रहे हो सर आप बिल्कुल। अब मुझे डाउट है कि मैं सही कह रहा हूँ, जब तू इतना घूम गया जलेबी की तरह, फिर कैसे कहूँ मैं सही कह रहा हूँ? सर नहीं सर, कैप्टन कभी गलत बोलता ही नहीं। ले एक और है, आप बताओ, अमित कुमार जी कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा एनीवे छोड़ो इसको, ये फालतू डिस्कशन है, इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, बिकॉज पकड़ा ही नहीं था सर हमने तो। people will have different opinion, so no end result. Anyway, what I'm saying is कि don't get bored up, just keep the view that you are doing this to pass the MMD exam, and this should motivate you, because finally that is the goal, to pass the MMD exam. That is the end goal, right? Just keep yourself interested and motivated so that you pass the exam. वैसे भी if you see, some people have interacted, कोई फायदा तो होता नहीं है। somebody was writing in WhatsApp also ग्रुप में कि यार इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। सो आई एग्री, ठीक है काफ़ी चीज़ें तो यूज़ नहीं होंगी, लेकिन रिजल्ट ये है कि आप पास कर लोगे एग्जाम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द जॉब गोइंग, राइट? चलो, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, इंटरेस्टेड, दैट विल हेल्प यू टू पास द एग्जाम। दैट इज वॉट आई कैन एडवाइज यू। बाकी आपकी इच्छा। So anyway, we are going to continue with this one. आज तो शायद ये नहीं हो पाएगा, but we got another class. I think maybe देख लेता हूँ। I think we got a class on Thursday or something. Met का थर्सडे सर, थर्सडे Thursday 11:30 to 12:30। Thursday ना? यस सर, 1130 to very 1223। good very good very good। अच्छा ये जो है ये मैं आपको पास कर देता हूँ, just for you know, ताकि आप उसको हाँ यस सर। somehow you can use it। सर इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आता है सर, और आंसर कैसे देना है? देखो, if you are looking for the questions, you will have to go back into the past papers। सर आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे पास क्वेश्चन थोड़े से? मेरे पास नहीं है, मेरे पास पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। आई एम टेलिंग यू कैटेगरी, मेरे पास नहीं है पास क्वेश्चन पेपर। आई डू नॉट हैव अ हैंड टू इट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज गेट होल्ड ऑफ इट। आई एम वेरी श्योर यू कैन बाय दिस आल्सो ऑनलाइन मे बी।
नो सर, You cannot buy. ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन नहीं है सर। है ऑनलाइन नहीं है। अरे ओएस के पास सब मिल जाएगा, नंबर डाल देता हूँ भाई ग्रुप पे। चलो ये वाला जो मैं बात कर रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये आपके उस ड्राइव पे पहुंच गया है। सो समथिंग यू हैव योर हैंड्स टू गो थ्रू इन योर फ्री टाइम और मे बी व्हेन यू आर बोर्ड अप, अगर देखना हो तो ये एक ग्रुप पे डाल दिया मैंने, वो उस लिंक पे। लिंक ये है जो मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ उसी लिंक पे डालूंगा। तो ISM कोड, नेविगेशन, रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, चेकलिस्ट, हैवी लिफ्ट कार्गो, ठीक है, और ये क्लाउड्स आ गया जो हम आज बात कर रहे थे। इट इज देयर, यू कैन यूज द लिंक एंड एक्सेस इट। ठीक है, इसके अलावा बताओ। नेक्स्ट सेशन इज ऑन कार्गो वर्क, दैट इज ओके। इसके अलावा एनीथिंग यू वांट टू रेज फॉर टाइम बिंग? ये देखो क्या डाला ब्रिजेश ने। जी है मोटिवेटेड। चलो देख लो, अगर यू डोंट हैव एनीथिंग टू से देन वी कैन स्टॉप राइट नाउ फॉर लंच ब्रेक एंड देन वी कैन मीट अगेन।